गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है गोल्ड कार्ड फॉर यूएस सिटीजनशिप। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यू गोल्ड कार्ड इन इमिग्रेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें कि $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ वेल्दी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूएस की सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो ये जो है EB-5 वीज़ा प्रोग्राम जो था उसको रिप्लेस करेगा। जो एग्जिस्टिंग EB-5 प्रोग्राम है उसको 1990 में बनाया गया था, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1.05 मिलियन की करनी होती थी और उससे जो है वो कुछ ना कुछ जॉब्स भी क्रिएट होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसका फ्रॉड या फिर मिसयूज़ किया जा रहा है। तो EB-5 वीज़ा प्रोग्राम जो है अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, जॉब क्रिएशन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ग्रीन कार्ड दिए जाते थे इसमें, जो 1,50,000 $1,50,000 या $800,000 जो है इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड एरियाज़ में लोग इन्वेस्ट करते थे और उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। 10,000 का जो है इसमें वीज़ाज़ एनुअली दिए जाते थे EB-5 प्रोग्राम में। लेकिन इसमें जो है कहा गया कि इसका मिसयूज़ किया जा रहा है और इसको रिसेंटली रिन्यू भी किया गया था। जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड को बढ़ाया भी गया था 2022 में, फिर भी जो है इसको रिप्लेस करके गोल्ड कार्ड स्कीम लाई गई है। तो जो EB-5 प्रोग्राम था उसमें इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो है 10 जॉब्स मिनिमम अमेरिकन्स के लिए क्रिएट होना ज़रूरी था, तभी जो है आपको ग्रीन कार्ड मिलता था। अब गोल्ड कार्ड में ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपको अमेरिकन बिजनेस या किसी जॉब क्रिएशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। डायरेक्टली बस आप वो ग्रीन कार्ड परचेज करो $5 मिलियन का, और आपको जो है वो सिटीजनशिप या फिर जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है उससे। ठीक है, तो क्योंकि प्रोसेस ईजी है तो इसका जो है प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू EB-5 प्रोग्राम। ठीक है, अब इससे जो होगा क्या कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो यूएस में मूव होने के लिए उनको एनकरेज किया जा रहा है, और ताकि वो यूएस की इकोनॉमी में रियल एस्टेट हो, चाहे लग्जरी मार्केट्स हों या बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हों, उसमें इन्वेस्ट करें। एक डायरेक्ट हाई कॉस्ट परचेज मॉडल दिया जा रहा है ताकि मिसयूज़ या रेगुलेटरी लूप होल्स इसमें ना रहें। ठीक है, प्रोग्राम प्रायोरिटाइज करता है वेल्थ ओवर मेरिट, और डिसएडवांटेज होगा इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। एथिकल और पॉलिटिकल कंसर्न्स भी रेज होते हैं इससे फेयरनेस के ऊपर अबाउट इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ यूएस। इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स जो है वो एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस के लिए। अनलाइक EB-5, गोल्ड कार्ड जो है उसमें कोई मैंडेट नहीं है कि जॉब क्रिएशन भी करनी है या बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही करनी है। एक ऐसा ही सिमिलर सा प्रोग्राम कनाडा में भी चला था, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था क्योंकि उसका वाइड स्प्रेड मिस यूज़ हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोग्राम के लिए। चैलेंजेस ये हैं कि इसकी तो पहले तो कांग्रेशनल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। रिपब्लिकन्स भी जो हैं वो भी हो सकता है कि इसको फुली सपोर्ट ना करें। जितने भी ये लीगल इश्यूज होंगे इसके ऊपर वीज़ा रिलेटेड, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है रादर दैन द पॉलिसी। ठीक है, तो अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। 2023 में सिर्फ 631 इंडियंस ने ही ग्रीन कार्ड ऑब्टेन किया था EB-5 प्रोग्राम के थ्रू, और $5 मिलियन तो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होने वाला है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीलिमिटेशन एंड द साउथ। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने अश्योर किया है सदर्न स्टेट्स को कि उन कोई भी जो है वो पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो लूज़ नहीं करेंगे आफ्टर डीलिमिटेशन। हुआ क्या है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। तो डीलिमिटेशन अगर जो है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से करें तो नदर्न स्टेट्स में जो है पार्लियामेंट्री सीट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू साउथ। तो ये एक उनका कंसर्न है। तो डीलिमिटेशन क्यों की जाती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होती है कि हर सेंसस के बाद नंबर ऑफ़ सीट्स जो पार्लियामेंट में है या स्टेट असेंबलीज़ में है उन्हें रीएडजस्ट किया जाए, ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज़ को भी रीडिफाइन किया जाए, ताकि वो लेटेस्ट पॉपुलेशन को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर सेंसस के बाद एलोकेशन की जानी चाहिए लोकसभा सीट्स की, और उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए पॉपुलेशन चेंजेस के हिसाब से। आर्टिकल 81 जो है उसमें लिमिट डाली गई है कि लोकसभा मेंबर्स जो हैं 550 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 530 जो हैं स्टेट्स के, 20 जो है यूनियन टेरिटरीज़ के, ताकि जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले सिमिलर पॉपुलेशन साइजेस को अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब हिस्ट्री देखें हम डीलिमिटेशन की इंडिया में, तो सेंससेस जब हुए थे 1951 के, 61 के, 71 के, तो सीट्स जो है लोकसभा में, राज्यसभा में और स्टेट असेंबलीज़ की रीडिस्ट्रीब्यूट हुई थी। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर
पार्लियामेंट ने फ्रीज़ कर दी थी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जब तक 2001 का सेंसस ना हो। 2001 के सेंसस में भी जो है के बाद भी जो है डिलिमिटेशन में सिर्फ बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ किया गया था, सीट्स नंबर का जो नंबर जो है वो नहीं चेंज किया गया था, ठीक है? क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने इसको अप्रूव नहीं किया था। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा लोकसभा सीट्स या इलेक्शंस पे? तो नंबर ऑफ सीट्स जो हर स्टेट रिसीव करती है वो बेस्ड अपॉन द एवरेज पॉपुलेशन होती है। 1977 में जैसे कि डिसाइड किया गया था कि 10.11 लाख पॉपुलेशन जो है वो हर एमपी एवरेज रिप्रेजेंट करेगा, और आइडियली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना था अराउंड दिस एवरेज नंबर, ठीक है? तो अगर हम 10.11 लाख की एवरेज रिटेन करने को माने तो लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है वो करंटली 1400 बढ़ जाएगी, मतलब 1400 सीट्स हो जाएंगी एज पर द 2025 पॉपुलेशन। और लेकिन न्यू पार्लियामेंट जो कंस्ट्रक्ट की गई है उसमें तो हैं ही सीट्स टोटल 888, तो ये फार्मूला तो ऑफ कोर्स नहीं इंप्लीमेंट होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सदर्न स्टेट्स को हमेशा जो है वो कम सीट्स गेन करेंगी कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ उतनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, तो उससे जो इन्फ्लुएंस है वो डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इन्फ्लुएंस उनका डिमिनिश होगा तो ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम होगी रीजनल पार्टीज़ को। रीजनल पार्टीज़ का फेयर है कि साउथ में जो है डिलिमिटेशन के बाद जो है वो उन्हीं पार्टीज़ को ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनका स्ट्रॉन्ग बेस है नदर्न इंडिया में, ओके? सदर्न स्टेट्स को लग रहा है कि उससे उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाएगी तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्फेयर एक्स टेलीस्कोप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा ने जो है वो प्लान किया है कि वो मेगाफोन शेप्ड स्पेस टेलीस्कोप जो है वो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे, जिसका नाम स्फेयर एक्स टेलीस्कोप है। ये एक मेगाफोन शेप्ड टेलीस्कोप है, मैप करेगा इंटायर यूनिवर्स को और डिटेक्ट करेगा कॉस्मिक लाइट, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो है डिटेक्शन भी करेगा, ठीक है? तो ये मेजर करेगा कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक पीरियड था जो लगभग 14 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, जब यूनिवर्स जो है वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट एक्सपैंड हुआ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है? ये हेल्प करेगा हमें बेटर अंडरस्टैंड करने को फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ग्रोथ ऑफ ऑल गैलेक्सीज अक्रॉस कॉस्मिक हिस्ट्री एंड लोकेशन ऑफ वाटर एंड लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजेस जो है वो मेजर करेंगी 3D पोजिशंस को अबाउट 450 मिलियन गैलेक्सीज अक्रॉस कॉस्मिक हिस्ट्री में, ओके? तो ये आइडेंटिफाई करेगा प्रॉमिसिंग रीजन्स फॉर लाइफ एंड गैदर करेगा लार्ज स्केल डेटा, सेपरेट मीनिंगफुल पैटर्न्स जो है वो उसमें से, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुंडली वाटर हार्वेस्ट सिस्टम। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुंडली ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्ट सिस्टम एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कि कैसे लोकल नॉलेज और आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी को यूज़ किया जा सकता है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो कुंडली वाटर हार्वेस्ट सिस्टम में क्या होता है? ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो डेजर्ट रीजन्स जो हैं राजस्थान के वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। इसको डिज़ाइन किया गया है तो कैप्चर और स्टोर करने के लिए रेन वाटर को। इसमें एक डीप सर्कुलर रेक्टेंगुलर पिट होता है जिसको या तो खोदा जाता है या फिर वो ग्राउंड में से या फिर उसको ग्राउंड के अबव ही बनाया जाता है। यूजुअली स्टोन्स, ब्रिक्स और अदर मटेरियल का यूज़ करके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है ताकि सीपेज ना हो पानी के नीचे। और पिट जो है उसको कवर कर दिया जाता है एक लिड या स्टोन स्लैब से ताकि कंटेमिनेशन ना हो डेब्री से या फिर इवेपोरेशन ना हो। तो रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है कई चैनल से या रूफ टॉप से, फनल होकर वो कुंडी में जाता है, वहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है फॉर ड्राई सीजन यूज़, ओके? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में लगभग 14,000 न्यू सीड सैंपल्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। तो ये लार्जेस्ट बैकअप फैसिलिटी है पूरे वर्ल्ड की क्रॉप डाइवर्सिटी की। ये नॉर्वेजियन आर्किपेलागो में एग्जिस्ट करता है स्वालबार्ड, और यहाँ पर वर्ल्ड की यूनिक क्रॉप जेनेटिक मटेरियल को जो है वो सेफ गार्ड करने का जो है वो एक मिशन है ये, जिसमें फ्री ऑफ चार्ज लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है सीड की दी जाती है इंटरनेशनल, नेशनल या रीजनल जीन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से। ओनरशिप जो है वो उन्हीं डिपॉजिटिंग जीन बैंक के पास ही रहती है, और इसको एक डीप माउंटेन के अंदर डाला गया ताकि डिजास्टर्स चाहे वो न्यूक्लियर वॉर से हो या ग्लोबल वार्मिंग से उसको ये विथस्टैंड कर सके, ओके? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। ये टॉपिक आपके जो है गवर्नेंस के लिए और सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा वर्कर्स जो हैं वो केरला गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो अपनी मंथली रेमुनरेशन को 21,000 रुपये पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है? तो आशा कौन होती हैं? ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट जो कि फंडेड होती हैं NRH नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर, और ये प्रमोट करती हैं पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस
अमंगस्ट लोकल और रूरल पॉपुलेशन और इंक्रीज़ करती है यूटिलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस की तरह काम करती हैं कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच में। तो ये एक्ट करती हैं एज अ केयर प्रोवाइडर एट कम्युनिटी लेवल, फैसिलिटेट करती हैं एक्सेस टू हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड सैनिटेशन सर्विसेज, रेज करती हैं लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इशूज़, एडवोकेट करती हैं फीमेल हेल्थ और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को, एडवोकेट करती हैं हेल्थ कॉन्शियस बिहेवियर को। आशा स्कीम प्रेजेंटली सभी स्टेट्स या यूटीज़ में इंप्लीमेंट की जा रही है एक्सेप्ट गोवा। स्टेट्स को मैंडेट होता है कि वो कम से कम एक आशा वर्कर हर 1,000 लोगों पर जो है एम्प्लॉय करें। इनको बेसिक पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग दी जाती है, रिगरस प्रोसेस ऑफ इनका सिलेक्शन होता है। रूरल एरियाज़ में आशा जो है वो कम से कम एक वुमेन रेजिडेंट होनी चाहिए विलेज की, एज ग्रुप 25 से 45 साल के बीच में होना चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में वुमेन रेजिडेंट जो है वो स्लम या वल्नरेबल क्लस्टर्स को बिलोंग करती होनी चाहिए और पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप से होनी चाहिए। स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो पॉपुलेशन नॉर्म्स को जो है वो रिलैक्स कर सकें और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी रिलैक्स कर सकें। आशा वर्कर्स की मंथली इनकम को 2,000 से लेकर 7,000 के बीच में रखा गया है, हर डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टेट है। इनको जो है कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं और इनकम भी मिलती है सोशल मार्केटिंग करने की कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चोला नायकन ट्राइब। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन देने के लिए एक बेड रिडन गर्ल जो कि चोला नायकन ट्राइब को बिलोंग करती है, समग्र शिक्षा केरला प्रोग्राम ने जो है प्रिपेयर किए हैं 30 ऑडियो विजुअल टेक्स्ट ट्राइब की अपनी खुद की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज में। तो चोला नायकन ट्राइब जो है एक डिमिनिशिंग ट्राइब है इंडिया की। इनकी पॉपुलेशन लेस देन 400 मेंबर्स है। ये करुलाई या फिर चुंकाथरा फॉरेस्ट रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। पीवीटीजी हैं ऑफ कोर्स, प्रेफर करते हैं ये कि आइसोलेटेड रहे। अभी भी ये डिपेंडेंट है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। इनको हम केव मैन ऑफ केरला भी कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली एक्नॉलेज किए हैं इंडिया के स्पेसिफिक कंसर्न्स को रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक टैरिफ है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पर। एक ईयू का इंस्ट्रूमेंट है कार्बन लीकेज को रोकने के लिए, जिसमें कि क्या होता है कि समझ लो ईयू का कोई इम्पोर्टर है, रादर दैन वो ईयू के प्रोडक्ट्स खरीदे जो कि कहा जा रहा है कि कार्बन न्यूट्रल है या फिर वो जिसमें लो कार्बन एमिशंस होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट उसकी बजाय ईयू के प्रोडक्ट खरीदने के बजाय बाहर से खरीदते हैं, तो उनको जो है ये प्रूव करना पड़ता है कि जो वो बाहर से जिस कंट्री से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है वहाँ पर उस प्रोडक्ट का कार्बन फुटप्रिंट कितना था। और अगर वो ईयू के प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है तो जो मार्जिन होता है उसका उनको गैप जो है वो उसके कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे और वो एक तरह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इंपोर्टर की, ठीक है, उतने पर्टिकुलर। तो सीबीएम जो है वो एक तरह से टैरिफ है जिसमें कार्बन का इस्तेमाल करते हुए ईयू जो है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो कार्बन प्राइस जो है वो इंपोर्ट्स का लेना चाहता है ईयू और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट कार्बन प्राइस जो है वो उसको लेना चाहता है। और ईयू इंपोर्टर्स को अपने एमिशंस डिक्लेयर करने पड़ते हैं जो कि जितना उन्होंने प्रोडक्ट बाहर से लिया है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि ईयू में जो स्टील की प्रोडक्शन होती है वो अगर 2 टन्स ऑफ कार्बन जो है वो एमिट करती है, और अगर लेकिन उसकी कॉस्ट जितनी भी पर्टिकुलर एक्स अमाउंट की कॉस्ट बनती है, वो अगर ईयू के जो है यूज़र्स उनको महंगी लगती है, तो वो अगर समझ लो इंडिया से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं स्टील को, तो इंडिया में जो स्टील की जो कार्बन कॉस्ट अगर समझ लो 5 टन्स है, तो जो 5 - 2 जो कि ईयू की कॉस्ट थी, जो 3 टन्स की जो कार्बन की कॉस्ट है वो ईयू के इंपोर्टर्स को देनी पड़ेगी कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीद कर, जो जिससे कि ईयू ये कह रहा है कि हम कार्बन जितनी हम एमिशन करते हैं उतनी ही एमिशन हम जो है वो बाहर से अलाउ करेंगे, ठीक है। तो सीबीएम जो है वो 2026 से अप्लाई होगा, बट ट्रांजिशनल फेज़ में इसकी जो है एप्लीकेशन शुरू भी हो चुकी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं। ओके, सीबीएम जो है वो कवर करेगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, सम ऑफ द मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश.
So the first topic is gold card for US citizenship. This topic is important for your international relations. So US President Donald Trump has introduced a new gold card immigration initiative which will replace the EB-5 visa program. So for a $5 million investment, wealthy foreign investors can gain a path to US citizenship and permanent residency. This will be replacing the EB-5 program which was established in 1990 to which required minimum investment of $1.05 million to create or preserve jobs. Okay, but it had faced criticism for fraud and misuse. Okay, so EB-5 visa program was established by US Congress in 1990, and this program aimed to boost the American economy through job creation and capital investment by foreign investors. So this program granted green cards to immigrants who invested at least $1,050,000 or dollars, or at least $800,000 in economically distressed areas, which were basically targeted employment areas. So this EB-5 program was capped at 10,000 visas annually. Okay, and 3,000 was reserved for investments in high unemployment areas. So this program faced criticism for deviating from its intended purpose, and this program was recently renewed in 2022 with investment thresholds increased, but it also required creation of at least 10 jobs for Americans. Okay, but this card program will not have any requirement of investment in American businesses or job creation. An investor can directly purchase just a green card for $5 million. So USCIS will be regulating and issuing these gold cards, and because this will just be a transactional approach, it will be having a faster processing time as compared to the EB-5 program. So this will be a straightforward residency pathway, and this will encourage high net worth individuals to move to the US. These investors could contribute to the economy through real estate, luxury markets, and business investments. This will be a high cost purchase model, and it will help minimize misuse and regulatory loopholes. This program will prioritize wealth over merit, so therefore there is a disadvantage for skilled professionals. It also raises ethical and political concerns about fairness in immigration policy. The investment-based immigration programs can be exploited for money laundering and foreign influence also, okay, especially by China. Unlike EB-5 program, the gold card does not mandate job creation or business investment. A similar program in Canada was discontinued due to widespread misuse. Okay. So immigration policy changes require congressional approval. So this will become a major obstacle for the Trump administration's program of residency permits. So of course, Republicans still hold a majority, but not all of them will be supporting this program. Democrats will of course oppose this proposal. Most visa-related legal issues also arise from program administration rather than the policy itself. Okay, what will be the impact on Indians? In 2023, we saw that only 631 Indians obtained green cards through the EB-5 program. So, given the $5 million tag with this on this gold card, it may not be very attractive for many Indian investors. So the next topic is delimitation and the South. This topic is important for your polity section. The Union Home Minister has assured southern states that they would not lose any parliamentary seats after delimitation. So due to slower population growth in South as compared to the North, delimitation based on the latest data could have resulted in a significant increase in the seats for northern states as compared to the southern ones. So what is the need for delimitation? It's a constitutional mandate which is carried out after each census to readjust the number of seats in parliament and state assemblies and redefine constituency boundaries. So Article 82 of the Constitution mandates that after each census, the allocation of Lok Sabha seats must be adjusted based upon population changes. However, Article 81 limits the total number of Lok Sabha members to 550, with 530 coming from states and 20 coming from union territories. The goal is to ensure equal representation by maintaining similar population sizes across constituencies. So, what is the history of delimitation in India? After the censuses of 1951, 61, 71, seats in Lok Sabha, Rajya Sabha, and state assemblies were redistributed. But in this, during the emergency period, 42nd Amendment Act of the Parliament basically froze the total number of seats until the 2001 census.
So while constituency boundaries were redrawn in 2001, the number of seats remained unchanged. Okay. So what will be the impact of delimitation on Lok Sabha and seats and elections? Number of seats each state receives after delimitation will depend on the base average population that a future delimitation commission would establish. In 1977, each MP represented an average of 10.11 lakh people. Ideally, constituencies should be evenly distributed around this average. But if 10.11 lakh average is retained, Lok Sabha strength could rise to nearly 1400 based upon the 2025 population projections. So since the new parliament has only 888 seats, this formula is will not be implemented. So, but experts are believing that regardless of the formula, southern states would gain fewer seats as compared to the northern states. Okay, so regional parties in the south are fearing that delimitation would, based upon population, would benefit parties with a strong base in northern India. They are also fearing that this will reduce their representation in parliament, weakening their political influence. Okay. So the next topic is FairX telescope. This topic is important for your science and tech section. NASA has tentatively scheduled to launch its new megaphone-shaped space telescope aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. So this is a FairX telescope, which is a megaphone-shaped telescope. It will map the universe while detecting two kinds of cosmic light, optical and infrared. It will measure something called cosmic inflation. This cosmic inflation refers to a period which took place around 14 billion years ago, in which the universe expanded faster than the speed of light for a fraction of a second. It will help better understand things about the formation of the universe and the growth of all galaxies across cosmic history, and of course, the location of water and life forming molecules in the Milky Way galaxy as well. Okay, it will use spectroscopic images to measure the 3D positions of about 450 million galaxies across cosmic history. So, mapping the whole sky enables astronomers to identify promising regions for life and gather large scale data also. Okay. So the next topic is Kundli harvest, water harvest system. This topic is important for your environment section. So Kundli traditional water harvest system is an excellent example of how local knowledge and architectural ingenuity can address environmental challenges in water scarce regions. So uh, Kundi is basically a traditional rainwater harvesting system in which is predominantly found in desert regions in Rajasthan, and it is designed to capture and store rainwater. So it consists of a deep circular and rectangular pit which is either dug into the ground or constructed above ground. So it is usually lined with stones, bricks or other materials to reinforce the structure or and prevent steepage. So the pit is often covered with a lid or stone slab to prevent contamination from debris and reduce evaporation. Rainwater is collected through channels or from rooftops and then funneled into the kundi where it is stored for use during the dry season. Okay. The next topic is Svalbard Global Seed Vault. This topic is important for our environment section. So recently the Svalbard Global Seed Vault has received more than 14,000 new seed samples. So it is the largest backup facility for the world's crop diversity. This Svalbard is the Norwegian is located in the Norwegian archipelago. So the seed vault's objective is to safeguard as much of the world's unique crop genetic material as possible. It offers a free of charge long-term storage of seed from international, national and regional gene banks and institutions. The ownership of the seeds remain with the depositing gene bank, and it has been set deep inside a mountain to withstand disasters from nuclear war to even global warming. Okay. So the next topic is accredited social health activists. This topic is important for your social issues. So ASHA workers have been on an indefinite stare in front of the Kerala government secretariat, demanding an increase of their monthly remuneration to 21,000 rupees. So ASHA is a trained female community health activist, which is this program is funded by the National Rural Health Mission to promote public health awareness among local rural populations and increase the utilization and accountability of existing health services. So it is basically an interface between community and public health system. So these ASHA workers, they act as a care provider at the community level. They facilitate access to healthcare, medicine and sanitation services. They raise the level of awareness of health issues among the marginalized sections within the community. They advocate for female health and hygiene standards. They also advocate for a health conscious behavior and approach to livelihood. The ASHA scheme is presently in place in all states or UTs except Goa. States are mandated to employ at least one ASHA worker per every 1,000 people. They receive basic public health training and they are equipped with standard drug kit as well. They are chosen through a rigorous process of selection.
Okay, so in rural areas, Asha must primarily be a woman resident of the village, preferably in the age group of 25 to 45 years and literate. In urban areas, Asha must be a women resident of the slum or vulnerable clusters and belong to that particular vulnerable group, which has been identified by the city or district health society. Okay, states have been given the flexibility to relax the population norms as well as the educational qualifications. So, on an average, an ASHA worker's monthly income varies from 2,000 rupees to 7,000 rupees per month, depending upon the state. In addition, she is eligible for incentives as well, and she would also have income from social marketing of certain healthcare products. Okay. So the next topic is Chola Naikan tribe. This topic is important for your social issues. So in a novel attempt to provide education to a bedridden girl belonging to the Chola Naikan tribe, the Samagra Shiksha Kerala program of the General Education Department has prepared 30 audio-visual text in the tribe's own distinct language. So Chola Naikan tribe, they are a diminishing tribe of India with a population of less than 400 members. It is one of the most isolated tribes. They reside deep inside the Karulai and Chungathara forest ranges of Western Ghats. They are classified as the particularly vulnerable tribal group. This community prefers to stay isolated and away from both agrarian and urban lifestyles. They are among those unique tribes which still depend upon the forest produce for their survival. They are also known as the cavemen of Kerala. Okay, because they use natural caves as a safe dwelling place in the space in the forest. So the next topic is carbon border adjustment mechanism. This topic is important for environment and your economy section. So European Union has recently acknowledged India's specific concerns about implementing the carbon border adjustment mechanism, which is basically simply a European Union tariff on carbon intensive products. So it's a EU instrument for preventing carbon leakage by shifting of the production of goods to non-EU countries where there is a lower or no carbon cost associated with their production. So what happens is that let's understand it with an example. So, for example, that's that there is steel production in EU, and a building is being constructed, and the contractor wants to procure steel. So, let's suppose that in EU, a company is making steel, uh, and it is producing 2 tons of carbon emissions by producing that amount of steel, but it is comparatively costlier for that contractor to purchase from EU company. So what he does is he tries to import it from India at half the cost of the steel. But what would happen is what would happen now is that EU would say that when you were purchasing it through the EU company, we emitted only 2 tons of carbon. Okay, but when you have purchased it from India or Indian steel, uh, while it was being produced in India, it emitted 5 tons of carbon. It emitted 5 tons of carbon during the production. So you would have to pay the difference amount of carbon by purchasing carbon certificates. So in that way, it is basically EU is forcing the importer to basically pay a tariff in the name of carbon emissions, so that the cost for the this importer or contractor would become comparatively same. So that's why he would prefer to go for the EU made steel instead of importing it from India. Okay, so EU importers will have to buy these carbon certificates corresponding to the carbon price that would have been paid in the EU if the goods were produced locally. So EU importers will have to declare the emissions embedded in their imports, and they have to surrender the corresponding number of certificates each year. So this mechanism will apply in its definitive regime from 2026. As of now, the transitional phase has begun. Only reporting obligations are made during this transitional period, and CBM will initially cover only specific products in some of the most carbon intensive sectors like iron and steel, cement, fertilizers, aluminium, electricity, and hydrogen. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.